Assalamu alaikum, dear friends. Hope everyone is fine, and once again, welcome back to the Knowledge Intimation. Alright, dears, today we are going to discuss some grammatical terms and the difference among those grammatical terms. So today our topic is the difference among sentence, clause, and phrase. So let's discuss the first point, which is sentence, and the definition of sentence is a group of words that contains subject and predicate and gives complete meaning is called sentence. यानी अल्फाज का मजमुआ जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो और वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. सो इफ यू सी देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस डेफिनेशन. इसमें हमारे साथ 3 पॉइंट्स हैं, जो कि पहला पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स द फर्स्ट पॉइंट, that contains subject and predicate. It's the second point. And the third point is that which gives us complete meaning, that is called a sentence. Alright, यानी जो हमें complete meaning दे उसको हम जो है ना sentence कहते हैं. So now examples we have that Ali is a teacher. It's the first example. And the second example we have she kneads the dough. कि वो आटा गूंथती है. Alright, it's the second example. Now let's apply this definition on these examples. So we have that Ali is a teacher. So what is the first point here? The first point was that a group of words. All right. So if you see, we have 4 words are here, and they are the group of words. And the second point in the definition, we discussed that would contain subject and predicate. जिसमें हमारे पास subject और predicate मौजूद होगा. So Ali is our subject, and the rest of the sentence is our predicate. All right. The third point we discussed which gives us complete meaning. यानी जो हमें complete meaning दे, that would be a sentence. And if you look at this sentence, अगर आप इस sentence को देख लो, so it gives us a complete sense. Like Ali is a teacher, यानी Ali एक teacher है. So it means that it gives us meaning. It is called a sentence. So हम इसको जो है ना sentence कह सकते हैं. The second example we have that she kneads the dough, कि वो आटा गूंथती है. It also gives us complete meaning, and it also contains subject and predicate, and which gives us complete meaning. So it is called a sentence. इसको हम जो है ना sentence कह सकते हैं. All right. The second point we have a clause. दूसरा जो point है हमारे पास वो clause है. अब clause क्या है? That a group of words that contains subject and predicate and gives complete or incomplete meaning. यानी जो clause होता है वो भी अल्फाज का मजमुआ होता है, इसमें भी subject और predicate मौजूद होते हैं, पर जो difference होता है clause और sentence के दरमियान वो सिर्फ एक ही point है. यानी definition में सिर्फ एक word का difference है कि ये अल्फाज का मजमुआ है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होंगे, बट इट गिव्स अस कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग. ऑलराइट, यानी ये कभी हमें कंप्लीट मीनिंग देगा तो कभी इनकम्प्लीट मीनिंग देगा. अब सेंटेंस में हमने बताया कि सेंटेंस विल ऑलवेज गिव यू कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस जो होगी वो आपको कंप्लीट मीनिंग देगी. ऑलराइट, अब जो क्लास है वो कभी आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, कभी वो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा. So examples we have that he failed the test although he studied hard. Alright, यानी अब ये एक सेंटेंस है हमारे पास, बट देयर आर 2 क्लॉजेस इन दिस सेंटेंस. पर हमारे पास यहाँ पर 2 क्लॉजेस इस सेंटेंस में मौजूद हैं. अब जो हमने यहाँ पर जो है ना 2 बातें की हैं कि विच गिव्स अस कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग. सो जो कंप्लीट मीनिंग हमें देगा दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. उसको हम जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग देगा दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज. उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. Alright, so I told you that it is one sentence but it contains 2 clauses in that. इसमें 2 clauses हैं. क्यों 2 clauses हैं? क्योंकि हमने बताया कि इसमें हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट होगा, a group of words होगा और सब्जेक्ट होगा. सो इसमें ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अप टू दिस प्लेस, राइट. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी मौजूद है. अब अगर आप इस सेंटेंस में दूसरा देखो तो दूसरा भी हमारे पास क्लास ही है. क्यों क्लास है? क्योंकि इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट मौजूद है. All right, and that is connected by subordinating conjunction although. So now if you see the meaning of these sentences, अब अगर आप इस sentences के meaning को देख लो तो इसमें हमारे पास है कि he failed the test, यानी उसने टेस्ट फेल किया या टेस्ट फेल किया था. ऑलराइट, इट मींस दैट इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. बट इफ यू लुक इट टू द सेकंड वन, अगर आप सेकंड क्लास को देख लो कि ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, अगरचे उसने स्टडी की थी, सो व्हाट,
It means that it doesn't give us complete meaning. कि ये हमें complete meaning नहीं देता है. So the first clause is an independent clause because it gives us complete meaning, and the second clause is a dependent clause because it depends on another clause, right? क्योंकि ये दूसरे clause पर depend करता है, therefore it is called a dependent clause. इसको हम dependent clause कहते हैं. Same like that, the second example we have that the patient had died before the doctor arrived. Now once again it is a group of words. ये अल्फाज का मजमुआ है और ये भी अल्फाज का मजमुआ आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं. अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट मौजूद है, द पेशेंट, और had died is a predicate, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट मौजूद है, the doctor arrived is a predicate, right? But the first one gives us complete meaning that the patient had died, मरीज मर चुका था. It means that it gives us complete meaning. ये हमें complete meaning देता है. The second one we have, once again here we used a connector subordinating conjunction before, and the second one we have that before the doctor arrived, यानी doctor आने से पहले. What? So it means that it doesn't give us complete meaning. ये भी हमें complete meaning नहीं देता है. All right. Now आप जो है ना, यानी आप ये कह सकते हो कि जो क्लास होता है, यानी जो सेंटेंस होता है उसको आप क्लास कह सकते हो. अब ये जो है ना हमारे पास के अली इज अ टी शर्ट, इसको आप क्लास भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू दैट व्हिच गिव्स अस कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग. जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास. सो आप इसको, इस सेंटेंस को क्लास भी कह सकते हो. कौन सा क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास इसको कह सकते हो, पर क्लास को आप सेंटेंस नहीं कह सकते. वो क्यों? क्योंकि क्लास में हमारे साथ इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकती है. यानी आप बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, सो यू कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते. दिस इज अ क्लास. ये एक क्लास है. ऑलराइट. सो द लास्ट पॉइंट वी हैव अ प्रेज. आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास प्रेज है. नाउ व्हाट इज प्रेज? प्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू और more words which give some sense but not a complete sense. यानी प्रेज भी अल्फाज का मजमुआ होता है और ये हमें सेंस देता है पर नॉट अ कंप्लीट सेंस, पर ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता. ऑलराइट. दूसरी बात ये कि जो प्रेज होती है वो सेंटेंस में अपना फंक्शन अदा करती है और उसके बाद उसकी जो मीनिंग होती है वो क्लियर हो जाती है. ऑलराइट. Now look at here that the examples we have that on the table. Examples are on the table. Second example we have the young boy. The third example is has been raining. Now if you notice these examples, so in phrase we do not have the subject and verb combination. Phrase में हमारे पास subject और verb की combination नहीं होती. यानी जब subject होगा तो verb नहीं होगा, जब verb होगा तो subject नहीं होगा. क्योंकि अगर subject और verb आ गए so then they can be a clause or सेंटेंस, फिर ये क्लास और सेंटेंस बन जाते हैं. ऑलराइट. सो प्रेज में नॉर्मली हमारे पास जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब की जो कॉम्बिनेशन होती है वो मौजूद नहीं होती. ऑलराइट. सो इट वाज ऑल अबाउट sentence, clause and praise, and hope you got the point and you understood better. So and the kinds of these clause and praise will be discussed in the next videos, so keep on watching our videos. Thank you.